Hello everyone, welcome in our YouTube channel Aristotle Bio Group, a complete solution for biology student. So in previous video we have started NCERT exercise question for chapter 1 sexual reproduction in organism. We have completed 6 question. Now we will start some more question regarding to this exercise. So let's see. So in today's video the question number 7, what is vegetative propagation process? Give any 2 example. So what is the meaning of vegetative propagation? In this chapter I have told you it is the method of asexual reproduction that available in plant body. I have told you in this method the single part of plant, stem, root, leaf, branches, the single part, the single piece of plant develops into the complete new plant body. This complete process it represents as a vegetative propagation. इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट का कोई छोटा सा टुकड़ा पूरे प्लांट में डेवलप हो जाता है. सिंगल प्लांट बॉडी इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज द टाइप ऑफ asexual reproduction. So बच्चों, that is only the meaning. The question is that what are the example of this process? Lots of example of vegetative propagation and some are number 1 potato. In potato, which structure is responsible for the development of new plant? So what is the name of the structure? Germinating bud. It is also known as eye of potato, eye bud. You have seen that on the surface of potato some green color structure is developed, and these structure are known as what? Germinating bud, and that is responsible for the development of the complete plant body. So first example is potato and second example it is ginger, adrak. And in ginger the modification of stem modified and convert into which structure? Rhizome. And that rhizome in ginger it is responsible for the development of new plant. So 2 example, potato, eye bud, and ginger, rhizome. So we have finished the question number 7 of NCERT exercise chapter number 1. Now we move on next chapter. Let's see. The next question, question number 8, that is define the 3 phase of life that present in organism that perform sexual reproduction. Juvenile phase, reproductive phase, and senescence phase. You have to define these following process. I told you that life is divided into 3 phase, 3 stage. First phase of life, juvenile, middle phase of life, reproductive, and the final stage of life it represents as a senescence. Now in first phase of life, that is juvenile, in this phase only growth process occur in the body of organism. खाली growth होती है. What is the meaning of growth? The length of body, the width of body, the mass of body it increase. So बच्चों, life के first phase में in animals, in plants only growth occur. There is no reproduction in this juvenile phase. And why juvenile में reproduction क्यों नहीं होता है? Because in this phase reproductive organ of animal do not develop, do not mature completely. तो juvenile phase में जो reproductive organ है, male animal testis, female animal ovary, these sex organs do not develop completely. That's why in this juvenile phase the reproduction process it is absent. So this is the first phase of life, bachpana. The second jawani, and third is budhapa. So now the second phase, jawani phase, reproductive. It is a middle stage of life in which
the reproductive sexual organ of living organism completely develop, completely mature. It means in this phase, in this stage, reproductive organism perform sexual reproduction. लाइफ की इस स्टेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. दैट्स वाई इट इज नोन एज व्हाट, reproductive phase. So that is the second phase of animal. Now the third phase, budapa, senescence. It is the last stage of the body in which growth process stops. Body की growth रुक जाती है and metabolic process of body it starts to decrease. What is the meaning of metabolic process? All the process in which एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड. बॉडी की वो सारी प्रोसेस जिनमें एनर्जी बनती है, दैट इज नोन एज व्हाट, मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो बुढ़ापे में क्या होता है, सेनेसेंस फेज में मेटाबॉलिक प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, सेल्स टिश्यू ऑफ बॉडी स्टार्ट्स टू डाई एंड दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ इट रिप्रेजेंट एज ए senescence phase. And finally what happen, death occur. So we have completed question number 8. Define these process. Now we move to next question. Let's see our next question in NCERT exercise, question number 9. Higher organisms resorted to sexual reproduction. Why? तो आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि नेचर में जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, डेवलप ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन दीज ऑर्गेनिजम्स व्हाई ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवलिटी ऑफ हायर और डेवलप ऑर्गेनिजम्स. डेवलप ऑर्गेनिजम्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सो the developed organisms, plants, animals, in these body of organisms different type of body characters are present, different type of new characters are developed and these body characters are responsible for survivability in different environmental condition. What is the meaning of survivability? जिंदा रहना. Now I am telling you some basic point. We have seen that in nature some animals present on water, aquatic animal, some animal present on desert, कुछ animal रेगिस्तान में रहते हैं, xerophytic animal, some animal present on land, जमीन पर, terrestrial animal. And you have seen that in the body of these animal different characters are present and these characters are responsible for survivability. अब एनिमल्स में जो बॉडी कैरेक्टर है ये इन्हें जिंदा रखते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में. एक्वाटिक एनिमल्स के कैरेक्टर अलग, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कैरेक्टर अलग एंड जीरोफिटिक एनिमल्स के कैरेक्टर अलग होते हैं. सो वी कैन से दैट दीज डिफरेंट बॉडी कैरेक्टर्स, न्यू कैरेक्टर्स आर नेसेसरी, आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. इन्हें जिंदा रखने के लिए कैरेक्टर जरूरी है. ना क्वेश्चन इज दैट ये कैरेक्टर बनते कैसे हैं? सो यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट न्यू कैरेक्टर, डिफरेंट बॉडी कैरेक्टर ओनली डेवलप इन विच रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, दैट कैरी डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर. दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, मेल का डीएनए एंड फीमेल का डीएनए, जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दैट्स व्हाई इन दिस रिप्रोडक्शन विच कैरेक्टर इज डेवलप? न्यू कैरेक्टर, नए कैरेक्टर बनते हैं. एंड बच्चों नए कैरेक्टर का बनना, दिस प्रोसेस इट रिप्रेजेंट एज व्हाट? वेरिएशन प्रोसेस. सो व्हाट इज द कंप्लीट कंक्लूजन? That higher organism always perform sexual reproduction because this reproduction perform variation used in the development of different body character that used for survivability of organism
in different geographical condition. So we have completed a question number 9. Now we move to new question. In NCERT exercise, our new question number 10. Why meiosis and gametogenesis process are interlinked? क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म वन इज meiosis सेल डिवीजन एंड सेकेंड प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस. ये दोनों प्रोसेस आपस में क्यों जुड़ी हुई है? सो लेट्स बिगिन. द वर्ड गैमेटोजेनेसिस, इट इज ए प्रोसेस इन विच गैमेट स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, गैमेट स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट का बनना, कौन सी प्रोसेस? गैमेटोजेनेसिस. पढ़ा चुका हूं मैं. टू टाइप ऑफ गैमेट, मेल गैमेट and female gamete, sperm and ovum. I have told you in this chapter that during sexual reproduction, when gamete are produced, during gamete formation, which cell division is required? Meiosis cell division is required in diploid organism, in developed organism. And what is meiosis? A type of cell division in which नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स हाफ. म्यूसिस किसे बोलते हैं? एक ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है. आधा पढ़ाया था मैंने अच्छे से. सपोज इन पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सो व्हेन द गैमेट इज प्रोड्यूस्ड, इन गैमेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स हाफ. 46 के कितने हो जाएंगे? 23. So we can say that when gamete is produced in developed organism, plants, human, animals, इनमें जब जब गैमेट बनते हैं तो कौन सा सेल डिवीजन होता है? meiosis. That's why both the structure are interlinked to each other. आपस में जुड़े हुए हैं. कभी भी गैमेटोजेनेसिस meiosis के बिना नहीं हो सकता. So we have completed question number 10. Now we move to the next question. Next question in NCERT exercise, identify some part of flowering part in response of diploid or haploid nature. In this chapter I have told you some cells are diploid, some cells are haploid. I have told you diploid is a cell in which double set of chromosome is present. Chromosome present in pair, that cell it is diploid. पढ़ा चुका हूं. That represent by 2n. Haploid is a cell in which single set of chromosome is present. क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है. That is haploid, represent by small n. Now in this question you have to identify some part of plant, whether it is diploid और हैप्लॉइड. आपके सामने फ्लोवर के कुछ पार्ट है, आपको बताना है कि ये पार्ट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है. सो लेट्स सी. द फर्स्ट इज ओवेरी. ओवेरी इज द बेस पार्ट ऑफ पिस्टिल, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट. ओवेरी पिस्टिल का बेस पार्ट है. और जो फ्लोवरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, that angiosperm plant the main body is diploid. angiosperm plant की main body diploid होती है, तो फ्लोवर भी diploid होगा, फीमेल पार्ट भी diploid होगा, और फीमेल का जो ovary region है that is also diploid in nature. So we can say that this ovary it is diploid in nature. Why diploid? Ovary it is the part of female part pistil, and pistil is the part of flower, and flower is the part of angiosperm. Now second, anther. याद करो anther. It is the part of male reproductive segment, that is stamen. So stamen is the male part of flower, that is diploid in nature. That's why anther is also what? Diploid. एंथर भी किस नेचर का होगा? डिप्लॉइड. आपको हमेशा याद रखना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट की जो मेन बॉडी है वो हमेशा डिप्लॉइड होगी. रूट,
स्टेम, लीफ, फ्लावर, और फ्लावर का फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, these are always diploid in nature, 2n. Okay, now the next, egg. Now interesting point, egg is the female gamete, egg cell. In this chapter I have told you that gametes are always haploid in nature. गैमेट हमेशा किस नेचर के होते हैं? हैप्लॉइड. तो एग इज द फीमेल गैमेट, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट टाइप ऑफ नेचर? हैप्लॉइड इन नेचर. प्लांट की बॉडी का मेन पार्ट है वो डिप्लॉइड होगा और जो गैमेट है वो हैप्लॉइड होंगे. नाउ द नेक्स्ट, पोलन ग्रेन. सो पोलन ग्रेन इज द पार्ट इन विच मेल गैमेट आर प्रोड्यूस. पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनते हैं. दैट्स व्हाई पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट. I've already told you. That's why the pollen grain, it is also what type of nature? Haploid in nature. Pollen grain में male gamete बनते हैं, so it is also haploid. The next is zygote. Very easy. How zygote is formed? The zygote is produced after fertilization process, after fusion of male gamete एंड फीमेल गैमेट. तो जाइगोट किसके फ्यूजन से बनता है? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट. द मेल गैमेट इज हैप्लॉइड, द फीमेल गैमेट इज हैप्लॉइड, बिकॉज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर. तो n प्लस n, तो जाइगोट में 2n. तो जाइगोट 2n है. इट मीन द जाइगोट इज ऑलवेज, just tell me, the diploid in nature. So we have identified some part of flower on the basis of ploidy, whether it is diploid or haploid. So we have completed question number 11. Now we move to next question. Explain external fertilization. External fertilization. Mention it. Disadvantage. Disadvantage. So now our new question, that is explain external fertilization. I have told you in this chapter the word external mean outside, outside the female body. Fertilization mean fusion of male gamete and female gamete. So I have told you in mostly aquatic animal, aquatic, frog, fish, in these animal fusion of male and female gamete takes place in water current outside the female body. In animals में sperm and ovum both are fused outside the female body. Female body के बाहर फ्यूज होते हैं पानी के करंट में, in water current, and such a fertilization, it is known as what? External fertilization. So that is only the definition, a process in which fertilization takes place outside in external medium. Now the second part, mention it disadvantage. इस fertilization का disadvantage क्या है, नुकसान क्या है? So in these animals the fusion of sperm and the fusion of ovum takes place in water. So we can say that the zygote is also produced in water current outside the body. So this zygote, it is higher in risk, higher in risk. It can be eat or engulf, or it can be damaged. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है, एम्ब्रियो है, वो बॉडी से बाहर बनता है.
This zygote can be attacked by another organisms. अब पानी में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है जाइगोट पे अटैक कर सकते हैं, ये जाइगोट डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. दिस जाइगोट कैन बी ईट और एनगल्फ बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन zygote embryo it is not safe, it can be attacked by another organism. So that is disadvantage of what? External fertilization. So here we have completed 6 question in today video, question number 7 to question number 12, and in next video, in next lecture, we will elaborate some more question of NCERT exercise. Till then, stay at your home, be safe, and don't forget to use mask in public places. Thank you everyone.